It's 17 hours. Good evening, sir. Good evening, Shivangi. I think today all alone, only one student. Oh, one more has come. Ananya has come. Right. So now I can start. Yes, sir. Fine then. Good evening, Shivangi and Ananya. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, so today is our eighth class. And what is my Yes. plan? My plan is to go for a revision class on ninth day. That is Monday. That is Monday. And then Okay, sir. I'm going to have Okay, an sir. online test on Wednesday. Okay. Okay, fine. Okay, sir. So let's see what today we have. Okay, now if you see the heading says Je sais compter. Je sais compter. So these both are two verbs. Say is to know, and compter is to count. So, like in English, if we use two verbs in one sentence, means I I'm going to eat. So infinitive. So we use the base verb. We don't change it. I'm going to eat. I'm going to fight. So I went. I went to fight. I went to eat. So the first verb it changes with the tense, but the second one it is unchanged. Similarly in French also, if you see, if you are using two verbs, say is to know and compter is to count. The first one is changing as per the subject, je sais, but compter is the base verb, right? So je sais compter means I know.
how to count. I know to count. Now we will start with 0 to 20. Now this photo, if it is clear to you, I will try to read one by one. So the first one is 0. 0. That is 0. 1 is UN. 2 is the, DEUX, the. 0, the. Then 3 is through. हल्का सा थॉ का साउंड है, थ्रुआ. Right? So 0, the, through, and the 4 is katra. Katra. And I believe शायद इसी से कहीं से वो क्वार्टर आया होगा. ये सब मेरा गेस है. If somebody will be Yes, sir. Maybe. कात्र जो है वो काफी मैच करता है, कात्र. Then 5 is sack. Sack. And 6 is seas. 7 is set. 8 is with. With है, H का sound नहीं है. So UIT is with. Then it is enough. Then these. Then onze. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. And then you have this set, this with, this neuf, and one. One. So once again, I will read this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1. This is your 1 to 20. Now, if any one of you want to try, you can try and speak. सर 3 का प्रोनाउंसिएशन एक बार और बताइए ना. छुआ. छुआ. हुआ. छुआ में क्या 5 है? का भी. हल्का तौ से थौ वाला साउंड हल्का सा, छुआ. 5 का इज सैक. सैक. So you go slow. जहां भी गड़बड़ होगा, I will stop you and I will correct you. Okay. 0, the, through, 4, 5, 6, 6 का है seize. seize, set, with, neuf, Nuff. nuff. This is These. so 10. These. 11, 12, Treize. Treize. क्या? Treize. 13, quarters. 14. Okay, 14. Then 15. 15. 14. 15. हाँ, 15. 15, 16. 16. 14, 16. 6, हाँ. 6. Okay. Now This set, this set, this this with, with, this with, then nap, this nuff, and one. one. Okay. Right. So now, Yes. if you will practice 3-4 times, then you will speak like Yes. zero, the, through, kat, sank, six, set, with, nuff, this, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, this set, this with, this nuff, one. So once this is there, it means now you are going fine. Shivangi, your turn. Yes, sir. 0, Hmm. the, through, 4, 5, 6, 7,
with, snuff, these, owls, those, whereas, catheters, cas, says, disip, dismiss, disnuff, wa. Very good. 14. Okay, okay, fine. So today I have kept only 1 to 20 because these are the main ones. And then from 21 to 100, it is more a combination. How we are finding this set, this width, this snuff. Similarly, after 21, it will be one and on. Yeah, 20 plus 1, 20 plus on. the- So wanते en, want the, want trois, want quatre, want cinq, want six, want sept, want with, ऐसा करके चलेगा उसके बाद. So 21 to 100 we will learn in our next class. थोड़ा सा हम और इसको एक बार we will practice and then we will go for that. Now coming to the next one is les nombres. So numbers के लिए क्या word है? Nombre. ले नोम्ब्र या फिर शिफ्र. शिफ्र का मतलब होता है फिगर्स. समटाइम्स हम मैथमेटिकल नंबर्स को फिगर बोलते हैं, राइट? Yes, sir. सो गिव मी अ नंबर इन 2 फिगर्स, राइट? सो ले नोम्ब्र या शिफ्र दोनों ही चल जाएगा इसमें. नाउ द फर्स्ट वन इज कॉम्बिया द क्रेयोन. कॉम्बिया कॉम्बिया द क्रेयोन आत्यू. आत्यू. अब आप समझिए कॉम्बिया, यू कम टू द सेकंड लास्ट लाइन. कॉम्बिया द इज हाउ मच या हाउ मेनी. इन फ्रेंच बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल वी हैव सेम फ्रेज कॉम्बिया द. कॉम्बिया द. क्रेयोन इज पेंसिल. कॉम्बिया द क्रेयोन आत्यू. आ इज द वर्ब हैव and thew is you. Tu, thew is you. So how many pencils you have? Do you have? How many pencils do you have? So the answer is j'ai trois crayons. J'ai trois crayons. What is the meaning in English? I have 3 pencils. I have 3 pencils. Now the third one is Madame, combien de livres avez-vous? Madame, combien de livres avez-vous? Avez-vous? So see, are-you, you have, avez-vous, you have respect, elder ke liye. So when we will start learning verb forms, then you will understand कि ये जो as आ है या avez आवे है, इस सब का जो मेन वर्ब है वो सिंगल है, बट एज पर द सब्जेक्ट वर्ब चेंजेस. फिर हम वो सीखेंगे कैसे उसको फिर चेंज करना है, हाउ टू मेक वर्ब्स इन विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट टेंस. सो मदाम कॉम्बिया द लिव्र आवेवू. लिव्र का मतलब होता है बुक. सो मैडम, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? एंड द आंसर इज अनन्या. I have 6 books. नो, चेक करेक्टली. फिर से देखो ध्यान से. Like 10 books. j'ai these livres. J'ai These. these livres. यानी कि I I have have 10 10 books. books. Okay. Yes. Voila, we have discussed while learning accent. Voila means there. And the counterpart of voila is voici. Voici, voila. अगर मेरे पास में कुछ रखा हुआ है, so here is और here are. थोड़ा दूर रखा हुआ है तो voila. This is, these are. Here is, here are, this is, these are. थोड़ा सा इंग्लिश से आप मैच ना करें. So voici का हिंदी इंग्लिश है here are and voila is these are. And then you have few more words जो आगे आपके इस्तेमाल में आएगा. I have questions in the next slide. Suri. Suri is a rat. Suri is rat. Boubon. 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 दोनों देखने में Sir. हाँ. Vella, these live
can it be a like it is correct? Wala, Like these. wala, books. these live. These are 10 books. Yes, sir. या wala, Yes, sir. है ना, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. These are 10 books. Okay. Hmm. Suri is rat. Boo, Suri. bon. Boo, bon. दोनों एक ही है, BON, BON. But the first one is boo, second is bon. Boo, bon is candy. और आपको दिखता होगा बहुत सारी जगह पे आपको bon bon के नाम से we get chocolates. Bon bon chocolate. Yes, a biscuit. That is a French word for candy. Boo, bon. Combien de is clear. How much, yeah, how many. Same combien de is going to be used. And the last one is je compte. Now you see, je sais compter. Je sais compter. I know counting. Compter was the base verb, but when I'm using compter with je compte. Je parle, I speak. Je compte, I count. So je compte jusqu'à 20. Je compte jusqu'à 20. I can count till 20. Jusqu'à is till. यहाँ तक. मैं 20 तक काउंट कर सकता हूँ. Je compte jusqu'à 20. I can count till 20. So if somebody asks you, what is your knowledge in counting in French language? Je compte jusqu'à 10. Je compte jusqu'à 30 means 30. ऐसे आप उसको जवाब दे सकते हैं. So 22 वो द होगा. Vent de. वही. Trois. Vent quatre. मतलब this सीज के बाद 16 के बाद जो काउंटिंग है वहां पर मैक्सिमम केसेस में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स. थोड़े थोड़े ऐसे हैं like 20, 30, 40, 50, 60 they have different words. उसके अलावा बाकी सब के सब आपस में कॉम्बिनेशन में है. So once we will learn 30, 40, 50, 60 to 100 and then we know 1 to 10 easily we can calculate them. Okay, so in the next class on Monday we will complete our counting from 1 to 100 and maybe few more numbers, the larger numbers which are important, वो भी हम discuss कर लेंगे. But this slide is okay. Combien de crayons as-tu? J'ai 3 crayons. Madame, combien de livres avez-vous? J'ai 10 livres. Voici is here is or here are. Voila is this is or these are. Souris is rat. Bonbon is candy. And combien de is how much, how many. Je compte jusqu'à 20 means I can count till 20. Now I'm coming to the next slide, which is a question. थोड़ा सा light हो गया है, but if you will pay attention, the first one is fromage, and Shivangi will tell me the meaning of fromage. So bread. It means revision is not happening. Ananya, fromage. So cheese. Very good. Next one, the right one, Ananya will speak. Suri. Easy. Suri. So mice. So Rats. mice, rats, Rat. okay. And Shivangi Yes, will sir. go for the third one. Snail. Escargot. Cargo. Escargot. Goo. Escargot. Snail. Snail. Ananya, next one is very easy. Try to pronounce. एक मिनट. Bonbon. 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 And Shivangi will tell the next one. Pins. The second last. Sans. Pins. Sans. Sans. Sans means Monkey. monkey. And the last one is for Ananya. Ananya. Sir, I can't pronounce that. Ouizo. Ouizo. Uizo. Ouizo Okay. is for Bird. birds. Right.
So now you have wala, voici, and you have the objects. Only you have to fill the numbers. So first, Yes, sir. Kumaz, Sivangi will fill up. 3 2 5 Numbers. With Wala. with promise. It is 8. So with, wala, with Yes, Promas. sir. Okay, very good. Next, Suri, Ananya. Sir, 5. Q से कुछ था. Sack. So Sack. voici, sir. Voici, Suri. sack, suri. Very good. हाँ. Next one, Shivangi. Scargu. Voila, voila, Wala nahi. Wala. sees. Wala. Sorry, voila sees escargot. Very good. Next one, Ananya. 9. Sir, numbers Sir, नहीं यार. Voila, voici Nuff. nuff, bovo. Nuff. Nuff. Bumbo. Okay. Okay. Next one is Shivangi. Sans. Trua, sir, trua. Voila, trua sees. Says. Sans. And the last one is Ananya. वैसी. Voici. Sir, numbers. Seat, sir, seat. Seth. Seat. Seth. 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 Yes, sir. Seth. वैसी Seth. Seth. Uizo. Okay. So, counting, I think, थोड़ा सा दम लगाना होगा, and then you will learn. The, thua, sir. ka, sack, seed, set, with, nuff, this. पहले 10 पे focus करना, 1 to 10, and then go for 11 to 20. Okay. Okay. Now, few more combinations we'll try to understand. So, through plew, plus is a plus only, the same script, but it is a plew. Through plew, the is 2. Sack. Egal. Egal matlab equal. Equal is egal. So through plew the egal sack. Sack. And 3 plus 2 is equal to 5. 3 plus 2 is equal to 5. With With mua. With mua egal Seth. means 8 minus 1 is equal to 7. 7. So plew is plus, mua is minus, and egal is equal to. ये एक समझने के लिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस. आगे चल के we will see multiplication and division also. Now I have few more phrases which we need to understand. What's going on? Kas pasetil. Kas, because ka or sa hai, so kas pasetil. Kas pasetil. What's going on? Okay. These are the again common phrases. What is your phone number? Kele. Kele क्यों हो जाएगा? Because L है और E है, so kele. Kele ton. Kele ton. Numero the telephone. Telephone. E और E दोनों पे आपका वो एक्सों है. कौन सा एक्सों है ये? Who will tell me? शिवांगी, अनन्या. टेलीफोन पे कौन सा एक्सेंट है? देखो तो. Sir, grave. Grave है. ग्रेव जो है, एग्यू. एग्यू है ये. Sorry. ग्राफ जो है sir. वो आपका उल्टा ऐसा जाता है ना? Okay. तो केले तो न्यूमरो द टेलीफोन. व्हाट इज योर फोन नंबर? ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है which we can learn before we learn how to make sentences and all, which is going to be the toughest part afterwards. So basically we are learning the basic phrases. Okay. Now there is something called avant. Avant का मतलब होता है before. और avant मैंने क्यों बताया अभी? Because there is a very nice phrase, avant-garde. Avant-garde जिसका हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं. Avant-garde. G-A-R-D-E. Avant-garde. So avant-garde का मतलब अगर हम जाएं फ्रेंच में देखने के लिए तो ऐसे गार्ड, ऐसे सैनिक
जो कि सबसे पहले जाकर के एक बार वो क्या करते हैं, वो निरीक्षण, है ना, जाके देख के आते हैं कि भाई शत्रु शत्रु कहाँ पर बैठा हुआ है, कितना बंदूक है उसके पास में, तोप है क्या, ये है क्या, वो है क्या, राइट। सो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जो टुकड़ी, जो फोर्स पहले जाकर के देख करके आती है, उसको बोलते हैं एवों-गार्द। लेकिन इंग्लिश में अगर आप जाएंगे यूज करने एवों-गार्द, इसका बहुत ही शानदार मीनिंग है। इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे आपका लिटरेचर हो, उसमें जो सबसे पहले कोई नई विधा, कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नया स्टाइल खोज करके लाता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एवों-गार्द। वाओ। लाइक अगर हम बोलते हैं कि प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी, सो प्रेमचंद ने वो गांव के लोगों को समझ करके, उनके साइकोलॉजी को समझ करके उन्होंने कहानियां लिखी, एंड वो अपने आप में एक पहली बार इस तरह का स्टाइल पे कहानियां लिखी गई। सो वी कैन राइट कि प्रेमचंद वाज एन एवों-गार्द ऑफ हिंदी लिटरेचर। like this you can use। तो अब आप जाकर के इसको चेक कीजिए एंड इसका डिटेल्ड मीनिंग निकालिए एंड प्लीज यूज इट। सेकंड इज सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है विदाउट, एंड सॉन्ग अगेन इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेंच वर्ड विच वी यूज कॉमनली इन इंग्लिश। एंड कहाँ हम यूज Sir, करते it हैं? is very excessively used in law also. maybe There yes। are so, sir, I have read now, there are so many laws in which the name is composed using this word. सॉन्ग। सो जो सबसे कॉमन वर्ड जो मुझे दिमाग में आता है, दैट इज सॉन्ग। उसके बाद दूत, DOUTE। दूत इज द फ्रेंच वर्ड फॉर डाउट। सो सपोज इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश एंड आप बीच में आप लिख सकते हैं सौ दूत, शी वॉज एन एक्सलेंट राइटर। विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट, वो एक बहुत ही शानदार लेखिका थी। सौ दूत, without any doubt। Suppose if someone is telling you, okay, Ananya, do you think Dinkar was a great poet? Saudut, that's it, it is more than enough। Saudut, no doubt, without any doubt। So avant-garde and saudut both are a very nice French phrase which we use commonly in English। Now the next one is je pense। Now slowly you will also try to understand कि parle बोलना, pense सोचना, je sais जानना, से जानना, right? compter counting जानना, aia have रखना। तो हम धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े verbs भी हम सीख रहे हैं। je pense toujours à toi। je मतलब I, pense मतलब think, toujours। Now see, bonjour, good morning। aujourd'hui, today। toujours, always। toujours मतलब every day। always के लिए मतलब उसका शाब्दिक अर्थ हो गया toujours। हर दिन। every day तो उसको हमने समझ लिया, always के लिए हम यूज करते हैं। और तुआ, Yes. और हमको मालूम था, और पे कौन सा एक्सेंट है शिवांगी? ग्रेव। ये ग्राव है। हाँ, सो इंग्लिश में ग्रेव बोलेंगे, ग्राव, ग्राव बोलेंगे। ग्राव। तुआ मीन्स यू। je pense toujours à toi। So French you will enjoy if you will start using these phrases in your English writing। तब आप enjoy करेंगे इसको। So what I request कि start using them, because Ananya, she keeps on writing some poems and all in a very nice styles, so you can write। I always think of you। je pense toujours à toi। okay। bon voyage, ये तो कॉमन ही है, सबको मालूम है। हैप्पी जर्नी, bon voyage। right, you are getting my voice? bon Yes, voyage। sir. okay, happy journey। and the last one again is a fantastic phrase, déjà vu।
seen. Déjà vu, already seen. So view is the a verb to see, है ना? और उसी का है déjà vu, already seen. ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? Déjà vu. So I met a person today in my office, or I met a person today in the market, or in the supermarket, in Big Bazaar, and after meeting him, I got a feeling of déjà vu. Got it? Yes, sir. I got a feeling of déjà vu. My God, means if you will start using all these phrases, your English is going to become superb. Because déjà vu we use in English also. Already seen. Yes, sir. And we go to that school, Ananya, déjà vu. Yes, sir. That is also again a French word. Déjà मतलब already. Vu मतलब होता है happy. Vu पता नहीं, I think हम English में भी use करते हैं. Wooing. WOO. Sir, WOO वो हाँ. मतलब कोट करना, किसी को कोटिंग कोट करना, राइट? सो कोट Yes, करना sir. यहाँ पर है, यहाँ पर हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है इन Yes, sir. Ma'am déjà has vu. explained अच्छा, she has that. explained. Okay. यानी कि यहाँ Yes, जो sir. बच्चे पढ़ते हैं, they are already happy. Yes, sir. So that is the same. Déjà is the French word. Already. Déjà vu. Okay. So that name basically means the familiar feeling of care and happiness. Déjà vu का जो actual meaning है. Yes, sir. What I मतलब was जो telling, name हाँ. मैम लोगों ने अडॉप्ट किया था उसका. Okay, okay. So उसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ, it is already happy. शायद उसी को थोड़ा सा Yes, उन्होंने, sir. हाँ, उन्होंने और थोड़ा सा explain करके बनाया होगा. Right. So quickly we will try to summarize. So today we have learned 0 to 20, and this needs practice. I will try to send you a video also, which is having this counting, so that you can listen to that video again and again, and you can get those sounds in your mind. 0, the, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. मेरा ही है. Okay, I have come back. अब सर I आ have गए. come back. I have come back. There was again a connection problem. Okay, so 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. This is counting. Je sais compter. I know how to count. I know counting. And then we have combien de crayons as-tu? How many pencils you have? J'ai 3 crayons. Madame, combien de livres avez-vous? Madam, how many books you have? J'ai 10 livres. I have 10 books. Voici is here. Voila is, this is, or maybe there he hai, but the shabd again, the exact meaning is these are. Souris is rat. Bonbon is candy. Combien de is how much, how many. Je compte jusqu'à 20. I can count till 20. And then we have these question answers, which we have done. And then you have the last one, that is trois plus de égale 5. With moi un égale 7. Que se passe-t-il? What's going on? Quel est ton numéro de téléphone? What is your phone number? Avant is before, sans is without. Je pense toujours à toi. I always think of you. Bon voyage is happy journey, and déjà vu is already seen. Fine. So. Sir, without doubt क्या था? Sans doute. Sans doute. DOUTE. Sans doute. Sans Okay. doute. Now, while talking to someone, you can start using this. Yes, sir. Without any doubt. So I know that he is a good singer without any doubt. So sans doute. He is the best singer, sans doute. Right? So in the next class on Monday, we are going to revise day 1 to day 8. And then finally, we are going to have an online exam on Wednesday. And I will be asking what all we have discussed. So bilkul go through all PDFs. Questions will be from that only. And after Okay, that, sir. class And- will over or what, sir?
So class is over, and there will be an oral test also. So also go through the सर name of. हाँ. मतलब सर 10th डे के बाद क्लास ओवर हो जाएगी फ्रेंच की? नहीं ओवर बिल्कुल भी नहीं आगे होगी. बढ़ेंगे So उसके बाद। टेस्ट जरूरी इसलिए है ताकि आपका रिवीजन चलता रहे. If revision will not continue, there's no point of going further, right? So just that you Yes, will sir. revise, टेस्ट सर, I will take a test. ओरल टेस्ट सर और रिटन? Both. Written also will be there and oral also will be there. ओके सर. So now you have Okay, time. sir. Please till Monday do the revision. Fine. Right then, see you on Fine, sir. Monday. Merci beaucoup, Lendi. Lendi, yes. Dimanche, Lendi. Okay. Dorian au revoir. गुड बाय सर. Bye, Shivangi. Bye. बाय दी.